Dear students, today we are going to study the new lesson number 6, natural resources. Dear children, our earth is blessed with a huge amount of natural resources such as water, air, sunlight, soil, minerals, vegetation, forest, animals, and a variety of other things. हमारे पृथ्वी को भारी मात्रा में प्राकृतिक संपत्ति जैसे वाटर, एयर, सनलाइट, धूप की मिट्टी, खनिज, वनस्पति, वन जानवरों और कई अन्य चीज़ों से नवाजा गया है. We depends on them for survival. If one of this gets affected to or depleted, its effect can be felt by us, plants and animals as well. हम जीवित रहने के लिए उन पर निर्भर है. मीन्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स लाइक वाटर, एयर, सनलाइट, सॉइल, मिनरल एक्सेट्रा. इनको जीवित रहने के लिए हम इस पे निर्भर है. यदि इनमें से कोई भी प्रभावित या कम हो जाता है तो इसका प्रभाव हमारा द्वारा पौधों और जानवरों को अच्छी तरह से महसूस किया जा सकता है. Next, we are going to study the natural resources. Just look like the picture of some natural things. What is resources? A resource is a stock or supply of things that are useful to us. एक संसाधन उन मीन्स संबंधी उन चीज़ों का भंडार या आपूर्ति है जो हमारे लिए उपयोगी है. इसको हम कहते हैं रिसोर्सेस. ओके, नेचुरल रिसोर्सेस. थिंग्स दैट कम फ्रॉम नेचर एंड कैन बी यूज्ड बाय अस आर नोन एज नेचुरल रिसोर्स. जो चीज़ों प्रकृति से आती है और हमारे द्वारा उपयोग की जा सकती है उन्हें प्राकृतिक संबंधी के रूप में जाना जाता है. एग्जाम्पल फॉर दैट, planets, wood, soil, etc. are the natural resources. Okay, resources means things that come from nature and can be used by us are known as natural resource. means जो चीज़ों प्रकृति से आती है और हमारा द्वारा उपयोग की जा सकती है उन्हें प्राकृतिक संबंधी के रूप में माना जाता है. एग्जाम्पल फॉर दैट, planets, wood, soil and water are also natural resources. We use these resources to create other resources which are known as artificial resource. हम ये चीज़ों का उपयोग अन्य संसाधनों का मीन्स संबंधियों को बनाने के लिए करते हैं. उन्हें हम कहलाता है आर्टिफिशियल रिसोर्स का रूप में माना जाता है. ओके, we use these resources to create other resources which are known as artificial resources. Like a plastic, steel and paper are artificial resources. Natural resources have been available on earth since early times. Early men discovered these resources and started using them. One of the first resources that they used was stone. The stone was the first used the material discovered by the early men. आदिमान लोग सबसे पहले एक मटेरियल को इस्तेमाल किया है और सबसे पहले क्या था? स्टोन. द नेचुरल रिसोर्सेस हैव बीन अवेलेबल ऑन द अर्थ सिंस अर्ली टाइम. जो प्राकृतिक संसाधन प्रारंभ समय से पृथ्वी पर अवेलेबल है, उपलब्ध था. पहले आदिमानव लोगों ने संसाधन की खोज की और आविष्कार भी किया है. उनका उपयोग करना शुरू करना सबसे पहले शुरू किया है. उनको उपयोग कैसे शुरू करना है? उनके द्वारा उपयोग किया जाने वाला पहले रिसोर्स में से एक था पत्थर. ओके, पहले आदिमान लोग ने संसाधन की खोज की और आविष्कार की. उनका उपयोग करना शुरू भी कर दिया. उनके द्वारा उपयोग किया जाने वाला पहला रिसोर्स में से एक था पत्थर.
The early man The early men made weapons from stones and used them for their protection and hunting. Later, they learned to rub these stones together to make fire. Eventually, they discovered many more natural resources and started using them to fulfill their everyday needs. For example, for that foods, wood was used for cooking, heating, and making toys and furniture. शुरुआती पुरुषों ने पत्थरों से हथियार बनाई। इसका उपयोग ऐसा होती है कि खुद सुरक्षा के लिए और शिकार के लिए इस्तेमाल किया गया। बाद में उन्होंने आग बनाने के लिए इन पत्थरों को आपस में रगड़ना सीखा और कई प्राकृतिक संबंधी के खोज की और उन्होंने हर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनका उपयोग करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। Sunlight, air, and water are the most essential natural resources. Sun and air, water are the most essential for natural resources. These resources help plants. A natural resource help करता है plants, animals and human beings survive for and grow. आगे बढ़ने के लिए अपन को survive करने के लिए ये चीज़ अपन को animals or human beings or plants also survive and grow. Activity that involve the utilization of natural resources provide to employment to people. For example, farming, fisheries and mining. प्राकृतिक संबंधी के उपयोग में शामिल गतिविधियों लोगों को रोजगार प्रदान करती है। If a country has surplus resources, it can be traded them with other countries. For example, in India has a surplus for mineral resources like coal, which it trades with other countries. India has the fourth largest coal reserves in the world. Our country has a surplus resources. These resources we can trade them with other countries. Example for our country has a mineral resources like a coal. This mineral we can trade with other countries. हमारे देश में कोयल जैसे खनिज संसाधन है। यह खनिज हम अन्य देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अन्य देशों को अपन व्यापार कर सकते हैं। एंड इंडिया हैज़ द फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व इन द दुनिया में से फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व इन द वर्ल्ड। खनिज में हम फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट है हमारा देश। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फर्टिल सॉइल एंड वाटर हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। उपजाऊ मिट्टी और पानी विभिन्न फसलों के उत्पादन में मदद करता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ मेनी रिसोर्स लाइक टिम्बर, रबर एंड स्पाइसेस। द फॉरेस्ट आल्सो प्रोवाइड लाइक टिम्बर, रबर एंड स्पाइसेस। मतलब वन भी लकड़ी और रबर और मसालों के तरह से प्रदान करता है। आयरन और कॉपर और बॉक्साइट आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ मिनरल resources. Some minerals resources like iron ore, copper ore, etc. are the some example of mineral resources. Next we are going to study the type of natural resources. Based on the availability, natural resources are classified into renewable and non-renewable resources. Renewable or inexhaustible resources. Renewable resources or
inexhaustible resources, Akshay or Ayok. Sunlight, water, air, soil, plants, forests, and animals are few examples of renewable resources. Suraj and sunlight, water, air, soil, plants, four are also example are the few example of renewable resources. Let us learn about renewable resources in detail. The sun is a constant source of light and heat from the अर्थ. सूरज पृथ्वी के लिए प्रकाश और गर्मी के एक निरंतर स्रोत है. द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय सन इज नोन एज सोलर एनर्जी. सूर्य द्वारा उत्पादित ऊर्जा को सौर ऊर्जा मीन्स सोलर एनर्जी के रूप में जाना जाता है. इट इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस. इसका उपयोग ऐसा होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों द्वारा किया जाता है. इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर पावरिंग अप्लायंसेस सच एज सोलर कुकर्स, सोलर हीटर्स, सोलर कैलकुलेटर्स एंड सोलर स्ट्रीट लाइट्स एक्सेट्रा. इसका उपयोग बिजली का उपकरणों के लिए भी किया जाता है, जैसे कि सोलर हीटर्स, कुकर्स, सोलर कैलकुलेटर्स लाइक सोलर स्ट्रीट्स आदि. इसका उपयोग करता है सोलर एनर्जी. Dear students, your first video has completed resources and importance of natural resources.